इसमें बहुत सारे लोग डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं. आर देयर एनी गुड स्टॉक्स विच हैव पेड लाइक गुड डिविडेंड्स इन द लास्ट 1-2 years? मैंने सुना था कि PSU कंपनीज बहुत ज़्यादा डिविडेंड्स देती है यूजुअली, बट ऐसे कौन से अच्छे कंपनीज है जो डिविडेंड्स ज़्यादा देती है? That's a good question actually. See, there is a saying कि everything is in the air, only cash is in the pocket. So when you invest in companies which give dividend, बहुत मज़ा आता है. See, मेरे पास 2-3 कंपनीज हैं जो डिविडेंड अच्छा देती हैं, तो साल में अगर 3 बार क्वार्टरली डिविडेंड देती है तो सडनली आपको एक मैसेज आता है कि X रुपीज़ क्रेडिट इन योर अकाउंट, और वो डिविडेंड से आते हैं तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है. सो एवरीवन शुड हैव सम कंपनीज विच गिव सम डिविडेंड, बट सी a company that gives dividend is also a sign of a good management, but it may also mean कि company is at a mature stage, उसको growth avenues इतने मिल नहीं रहे हैं, इसलिए वो dividend shareholders को दे रहा है. So historically it's a mix, it's a fine bag. Dividend investing is a fine style, but PSUs, you are right, have been great at dividend. and वो क्यों देते हैं? उनका ओनर गवर्नमेंट है ना. So government keeps on needing cash. So inherently PSUs generate, they own the resources of this country, so they pay cash. But private में there are many good companies. मतलब ITC is example of a company that pays good dividend. ITC ये स्क्रीनर आपको मिलेगा, आप स्क्रीनर में हर कंपनी का डिविडेंड यील्ड देख सकते हो. तो अगर कोई कंपनी का 2-3% डिविडेंड यील्ड है तो साल का 2-3% तो डिविडेंड से ही आ जा रहा है. उसके ऊपर में अगर स्टॉक 10% दे दे तो 13-14% हो गए, विच इज़ गुड. राइट. तो डिविडेंड यील्ड इज बेसिकली कि अगर मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया तो 2-3 रुपये मुझे बेसिकली डिविडेंड के तौर पे मिल रहे हैं. दैट इज डिविडेंड यील्ड. डिविडेंड यील्ड इज डिविडेंड डिवाइड बाय द शेयर प्राइस. सो ये सी वी आर एंटरिंग अ मार्केट वेर इन आई वुड से स्क्रीन, लोग स्क्रीनर रन करते हैं, स्क्रीन करो कौन से कंपनी 1% से 6% के डिविडेंड यील्ड में है. वो स्टार्टिंग पॉइंट बनाओ, उसके बाद देखो कि किसके फाइनेंशियल नंबर्स अच्छे लग रहे हैं. इट्स अ गुड वे टू इन्वेस्ट. बट लाइक वन कॉन्ट्ररी काउंटर पॉइंट टू दिस आर्ग्यूमेंट इज दैट कि अगर डिविडेंड दे रहे हैं तो ग्रोथ स्टॉक्स नहीं हुए ना फिर वो, इन द सेंस कि वो ज़्यादा ग्रोथ पे फोकस नहीं कर रहे. वही तो बोला ना कि अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है, इट माइट मीन कि इसके सभी ग्रोथ एवेन्यूज कम बचे. इट इज अ मैच्योर स्टेज कंपनी, राइट? सो देन इजंट लाइक वन वे टू थिंक ऑफ दिस, इज इट लाइक कि अभी ये ग्रो नहीं होगा, या तो मतलब इट्स बेसिकली नॉट गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ. नॉट नेसेसरी. Okay. It will not be the fastest growing companies don't pay dividend. So they will not be the fastest growing companies. Zomato देता है क्या? नहीं देता है. Zomato तो लिस्ट भी अभी हुआ ना, तो उसको तो टाइम भी थोड़ा लगेगा. नहीं, but you're right. See, ultimately you should know what you are wanting out of the market. My view is, if you are chasing 13% CAGR returns, market, and you do then market will give you more. Yeah. But if you're chasing 30% CAGR, then you will make negative. I'll repeat why I say that. If you are chasing 13% CAGR, 12-13%, हो सकता है मार्केट आपको 20% दे दे, बट वही आप 30% चेस कर रहे हो तो आप लॉस में जा सकते हो. करेक्ट. क्योंकि जब आप ऐसी कंपनी खोज रहे हो जो आपको 12-13% देना, आप इनहेरेंटली अच्छी कंपनीज खोज रहे हो. और जब आप 30% खोज रहे हो ना, तो आप यू गो टू रिस्की. यू डोंट गो एंड चेक द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, यू जस्ट बाय कंपनी. सी नरेटिव पे इन्वेस्ट नहीं करना है कुशाल. 2025 वो साल है ही नहीं कि ये कंपनी को ये ऑर्डर मिलने वाला है तो स्टॉक ले लो. इट इज़ नॉट दैट ईयर. सो दैट इज़ माई वन लाइन आंसर कि करेक्ट. ये साल ऐसा आ रहा है कि 12-13% रिटर्न्स will be respectable in the next year. Fair. नहीं, काफ़ी इंसाइटफुल, बहुत ही मज़ा आया ये डिस्कशन में. लास्ट क्वेश्चन, सो व्हाट इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वी डिड नॉट डिस्कस टुडे अकॉर्डिंग टू यू? So we partially discussed this, Kushal. One of the most important things we didn't discuss is investing is in two parts. One is the entire analysis, but the bigger part is behavior, and let me explain why I say that. They say कि great investing or even great trading, because I'm sure a lot of audience also trade. There are three parts. One is your analysis. Second is market psychology समझना. लोगों को सालों लग जाते हैं कि market psychology क्या है. And third is your behavior to market reaction.
सो ये हमने डिस्कस नहीं किया है कि बिहेवियर का रोल क्या होता है. एंड ये ना मुझे भी आई हैव ऑल्सो नॉट मास्टर्ड इट. पीपल से यू पूरी इन्वेस्टिंग में एनालिसिस तो जल्दी समझ में आ जाती है, बट मार्केट की साइकोलॉजी और आपकी साइकोलॉजी इन रिस्पॉन्स टू मार्केट साइकोलॉजी लोग को समझने में टाइम लगता है. सो दैट बिहेवियरल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग बायसेस you should read, people should read about it. And by the way, the best material on this was written by Mr. Charlie Munger. So he just Google Charlie Munger bias. And one thing that I've not discussed is, let us discuss few investing books which people can read, right? So I would suggest people read books by a gentleman by the name of Mr. Howard Marks. So there's a book called Mastering the Market Cycles. The reason I recommend that book right now is we are entering a inflection point of a market cycle. So a lot of people have invested only looking at order books. A lot of companies have been expanding. The world is in transition, Kushal. Energy is moving from thermal to renewable. Work is moving from human to AI. Everything is changing. So capital cycles are changing. So Mastering the Market Cycle is a great book to read. Then there's a book called One Up on Wall Street. Yeah. Peter Lynch, right? Peter Lynch. And there's a book called it's a third book is called You Can Be a Stock Market Genius. Sounds a little cringe. The name is cringe, but it's a great book on special situation investing. And India is a great market for special situation क्योंकि प्रोमोटर ड्रिवन है, राइट्स इशू होते हैं, डीमर्जर होते हैं, मैनेजमेंट चेंजेस होती है, प्रोमोटर बाय कर रहा है, बहुत कुछ होते रहता है. सो दिस बुक यू कैन बी अ स्टॉक मार्केट जीनियस फॉर स्पेशल सिचुएशन, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट फॉर ग्रोथ इन्वेस्टिंग, एंड मास्टरिंग द मार्केट साइकिल फॉर just understanding how cycles change in the... If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.